हाँ सच में, मतलब गुड। तो अच्छा लग रहा है डिस्कशन, रेलेवेंस आपको लग रहा है? मतलब आई एम हैप्पी कि यू हैव रिटेन्ड, क्योंकि लोगों में सीरियसनेस दिखती नहीं। ठीक है, अगर मतलब ये रिटेन किया है तो अच्छी चीज है, क्योंकि पढ़ाई से बोर जल्दी हो जाते हैं लोग। हाँ ठीक है, गुड। चलो, तो हम 11 हो गया। अच्छा, पीछे से, आज पीछे से करते हैं मेरे वाले। ये लास्ट तक है? अच्छा, या आगे से कहीं से भी करते हैं? चलो आज पीछे से आईआर से पहले करते हैं। ठीक है। सी इज इम्पोर्टेंट component of cosmos. Discuss in light of the above statement the role of IMO in protecting environment and enhancing maritime safety and security. तुम लोग ऑर्डिनरली ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो? हाँ, मेजॉरिटी तो नहीं पढ़ा होगा, हालांकि न्यूज में तो था, बट हर चीज आपको ध्यान रहे ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब आई एम फर्स्ट डिस्कसिंग assuming that we have not well read this organization. ठीक है, क्या एनवायरमेंट इकोलॉजी में इसको पढ़ाते हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाते हैं क्या वैसे? ठीक है, तो फिर भी हम क्या सोच सकते थे इसके बारे में? दो इन बिकॉज इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू इट्स काउंसिल, सो देयर वाज ए न्यूज, एंड there was also one treaty, something like that. I saw some video on Sunset TV, though I have not got, मतलब उसमें मैंने डिटेल में देखा नहीं था। तो करंट के एरियाज में मुझे ऐसे लगता है कि अगर ट्रैक करने हैं तो सनसेट टीवी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि वो जो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे इंडिया का कुछ रोल होता है, उस तरीके की चीजें आती हैं। तो सनसेट टीवी को अगर आप ट्रैक करेंगे तो वो इश्यूज मिलते हैं लगभग। एक क्वेश्चन तो मैंने कहा था आना ही है, ये वाला जो डायस्पोरा का था, उसमें बिकॉज अगेन आई वॉच्ड ऑन यूट्यूब इन इकोनॉमिस्ट की साइट पर, दे हैव प्रेजेंटेड अ गुड स्टडी on the role of Indian diaspora, and wherever Prime Minister Modi has been going, so diaspora का जो रिसेप्शन है या ये था, तो इसके ऊपर काफी चीजें चल रही थी। इवन आईआर क्या, अगर करंट टॉपिक्स को देखना है और तो बजाय ऐसे कोई वेबसाइट्स, आई थिंक जो इकोनॉमिस्ट वालों का यूट्यूब में भी आता है, कभी कभी उनको आप ध्यान में रखें। हाँ बट मतलब मुझे तो ऐसे आई गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मुझे ऐसे लगता है सनसेट टीवी इज गुड फॉर एग्जाम्स पॉइंट। अभी जैसे डीडी वाला भी आता है ना, वी इनवाइटेड श्री राम चौलिया सर, तो उनके भी जो डिस्कशंस होते हैं, क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस भी अच्छे होते हैं, एंड आई थिंक एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आपको वहां मिलता है। अगर कुछ देखना है तो ये देख सकते हैं, मेरा एक रजिस्टर था वहां, तो ये मतलब अगर हम, और लास्ट 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 तक आप बहुत सारा लिख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस मेंटेलिटी में आप कैसे इसको डेवलप कर सकते थे? डिस्कस मैरीटाइम होगा तो कुछ मैरीटाइम से इंपॉर्टेंट होगा, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट है
तो हम सोच सकते थे कि व्हाट आर द एक्टिविटीज विच मे बी इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट, और कुछ डिफ्यूज्ड सेंस में, जनरलाइज्ड सेंस में भी आंसर लिख सकते थे, एज्यूमिंग, ठीक है। इन इनहैंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी, हम अपने दिमाग से भी तो सोच सकते हैं कि what all come in maritime safety, what all can come in maritime security. तो at times such questions will also, अब यूनिडो विनिडो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी पढ़ेंगे, तो छोड़ के एक तो नहीं आना है, और नहीं एक वाइट एनवेलप टाइप है, छोड़ के नहीं आना है, और कुछ सेंसिबल लिख के तो आना ही है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी कि इसका मतलब क्या है। सी इज अ इंपॉर्टेंट component of cosmos. How to understand this? इससे how to deconstruct this particular statement. So cosmos means universe, and C is an important component of that universe. So universe has what link you can build between these two things. Important components, how it is important, how it is different. So let me start think about universe, fine, or cosmos. And in universe we see there are, even philosophy can help you in deconstructing. तो यूनिवर्स में एक मटीरियल डायमेंशन है, ठीक है, उसका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो सी रिप्रेजेंट both the living part and the non-living part also, fine. So is it an important component? If you see the sea, can you see the cosmos philosophically? ठीक है, तो सी में सारे लोग फ्लोट कर रहे हैं, यूनिवर्स में सब लोग फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, and universe has the living and non-living both components. तो try to show your imaginative capabilities. और ये क्या है, ये सब लिबरल आर्ट होता है, आप किसी भी ढंग से उसको इंटरप्रेट कर दें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो थोड़ा लॉजिकल लगे। आई डोंट नो कि इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, बट दिस इज हाउ वी कैन interpret. Philosophy helps in that way because we all are a part of the whole also, and even for the living beings, non-living is also equally important. So it is a interdependence. Life is what? Interdependence between the two. कुछ भी ढंग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो suppose फर्स्ट इसमें है deconstruction of this, and if you see maritime security has become a very important concern. We see almost every global platforms or declarations. If you talk about Sagar, you talk about blue economy, then also sustainable use of the seas, safety, addressing the conventional and non-conventional threats to safety and security is always there. तो जो भी हमें उस समय आ रहा है, ठीक है, उससे ही हमको उस समय we have to do best in a given situation, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख देंगे C is an important component of cosmos, तो इसका क्या implication आप लिखेंगे? कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, ये चीज तो ऐसे में भी आ सकती, ठीक है,
तो cosmos is universe comprising of living and non-living, and sea itself is a symbol of cosmos first. Then I will search ki maritime security protecting environment and maritime safety and security. So next we will talk about importance of maritime sphere. ठीक है, तो why maritime is important? Oceans are important, maritime sphere, oceans and seas are important. From what perspective? From perspective of human security. Human security in terms of food security, in terms of energy security, in terms of our entire life cycle, या जो बोलते हैं biology में biodiversity and many other things. तो next conceptualize कर दो maritime security. Fine. And second, I can talk about that maritime security or maritime sphere is very vital for our life in terms of trade, ठीक है, in terms of even for geopolitics, geoeconomics. So this is so important, maritime sphere. In fact, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, but to understand the issue, Alfred T. Mahan says that one who controls the oceans will control the world. Means it is a key to power, key for sustenance, etc. And how in present time maritime safety and security is becoming an issue. So how should you talk about maritime safety? Means those who are living in the maritime environment, ठीक है, safety of those, safety of the fishes, the safety of the other organisms, ठीक है, तो इनकी safety, organism, plants, diversity, that we utilize the maritime wealth in a manner which is least harmful, most sustainable and replenishable. ठीक है, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी समझा सकते हैं. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी इन 21st century, the concept of security has become multidimensional, and it is believed that at the center of security is obviously human security, but human security is also interdependent on the security of other spheres of life, maritime. Plus there are conventional and non-conventional threats to human security. Conventional threats means other state, but non-conventional threats in terms of environmental security, pollution of all these things, and we all know how human life and plant and animal life is inextricably interlinked. So this is how you put forward the understanding of the issue. Okay, and then role of IMO, a maritime organization. Fine. So maybe you know about it, maybe you don't know. Fine. लेकिन हो सकता है पता हो. तो it is also one of the important body of United Nations which aims at ensuring the safety and security. इसी में तो इनका रोल है. Fine. So their prime role is to identify the major threats and how to overcome that. So one of the major threat to the maritime security comes from those human use where we use this particular sphere, and that is through the shipping.
Fine. So there have been issues of oil spill, there has been issues of ships, and those who are traveling in the ship, ultimately you have to release the waste material. Fine. So as our sensitivity is increasing, this organization is working with the different stakeholders in evolving the global norms and conventions regarding the safe and sustainable shipping, the sustainable use of all these conduct of economic activities in a sustainable manner. ठीक है, तो कुछ तो लिख के आ सकते थे. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे वो हमेशा जो आप नहीं पढ़ेंगे, आप इमेजिन नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको और डिस्कस करने की जरूरत नहीं. सो नाउ लेट अस सी कि पढ़ा वाला कौन सा था और उसको कैसे कर सकते थे. एससीओ वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज इंडिया has for the first time conducted the SCO summit. तो SCO कैसे नीचे करो. What is the next question? इसमें से देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ SCO पे है ना, ये वाला नेटो पे है. ओके. हाँ, कर सकते हो. देखो जीएस में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन ये है कि कई चीजों को समझ के भी आप आंसर लिखिए, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं होगा कि यूपीएससी का पेपर है और आपको सब आता हो. फिर यूपीएससी के पेपर का वैल्यू नहीं. ठीक है, तो वो भी तो मतलब एक, अगर कोई एग्जाम की क्वालिटी है तो इसी एग्जाम की क्वालिटी है, ये तो मान के ही चलना होगा कि कुछ तो ऐसा होगा. यस. क्वेश्चन नंबर 19. तो एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप works well for India. What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer. ठीक है, तो expansion and strengthening of NATO. Expansion of NATO has happened in context of Ukraine war, and Finland, Sweden, Ukraine itself has planned to join it, and Finland has been introduced or has been given the membership. Sweden's is pending because of Turkey's objection, but Turkey's objection has also considerably got diluted in a big way. And the question of Ukraine and strengthening of NATO. How will you say strengthening of NATO? Who weakened the NATO? Trump. And then Biden has restarted strengthening the NATO, rebuilding the confidence of the allies, and then that strengthening has been happening, which was almost got abandoned during the time of Trump. Fine. And the recent summit at NATO. Two things, the recent summit of NATO that happened in Lithuania. ठीक है, दो चीजें हुई. All countries agreed, despite the economic slowdown in all these places, they all agreed to contribute 2% of their GDP for NATO. Plus, for the first time,
after the end of Cold War, a decision has been taken to prepare a comprehensive defense plan of NATO. ठीक है, तो NATO was formed primarily against USSR. NATO's first general secretary, you must be remembering, class में मैंने बताया था, Lord Ismay. He has explained the objective of NATO is to keep Russians out, Germans down and Americans in. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, बट primarily NATO is what? A collective defense platform which aimed at protecting or containing USSR. ठीक है, तो ये it has become after the end of Cold War, when Warsaw Pact got dissolved and US and Russia also entered into strategic partnership, NATO's existence was under question. And NATO has redefined its goal in the form focusing on the threats of 21st century like terrorism, and main area of operation became Afghanistan. Fine, so that was certain modifications. Now NATO is coming back to its original form. So since there was no enemy like USSR, NATO never thought up till now on having a comprehensive defense plan. Fine, but because of Ukrainian war and because of rising tensions with China, for the first time NATO has come up with a new comprehensive defense program. And there is a concept of NATO plus, where they have included US allies in the Asia Pacific region. Australia is a part of NATO plus, New Zealand is a part, South Korea, Japan and Israel. Fine, these are part of NATO plus. And recently a committee of US Congress had proposed that India should also be made a part of this particular NATO plus program, and they have explicitly mentioned that the purpose like that will give more effective deterrence against Chinese aggressionism. ठीक है, तो NATO outlived its importance because of Trump, but it is now again. And a stronger US-Europe strategic partnership. Again, because of Trump, lot of divisions have come between US and Europe, and many policies of Trump administration, मतलब his attitude towards the allies, तो वो differences आ रहे थे. And also because of the US, since the 2-3 things have impacted their relationship. पहला तो था US and Iran tensions. So EU always wanted that this tension should be resolved amicably because their security is territorially linked with the Middle East because they share the borders. The next issue has been the Syrian war, which has created the problem of refugees and migration, which has created problem internally in EU for its cohesiveness. So they had blamed them. And the third has been EU-China continued trade. Fine. And EU entered into free trade agreement, though it has not been operationalized, but EU entered into free trade agreement with China against the wishes of US. So there were certain points that they went away from each other, and there was a disagreement between EU and US over the policies with respect to Russia. So EU was not in a mood that we should invite Russia's aggression because
EU's energy security, Russia has been the source of cheap labor. तो ये divergences थे. But because of Ukrainian war, EU as such has become more integrated and US-Europe strategic partnership has improved. अब हमें बहुत जरूरी नहीं है कि हम सारा ये स्टोरी लिख पाए, तो हमको चीजों का एसेंस समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहे हैं. तो ये पूछ रहे हैं यूएस EU टुगेदर becomes West. India's partnership with West, how does it works well for India? It works well for India? Yes, because West is a source of technology. West is also a place, you can say, which is market for India's products. Fine. Then our diaspora is also existing there. We have, though they are also there, but we have to be concerned about their safety, security, and above all, the factor of China, Chinese aggressiveness, which is creating a imbalance. ठीक है? So to rebalance China, India will also require this thing. ठीक है? तो हमें ये कई लोगों ने इसको शुड इंडिया ज्वाइन नेटो के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन नहीं, हमको इसको इसका एसेंस लेना है. एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि वी शुड स्ट्रेंथन आवर पार्टनरशिप विद द वेस्ट. ठीक है? तो डज इट ऑगर वेल फॉर इंडिया? यस. So what can be the cost of India's stronger partnership with the West? Maybe India's relationship with Russia or India's relationship with the third world countries which are anti-West. So India's relationship with Russia, but presently what we see that willingly or not, Russia is isolated. Russia is going too much in the direction of China. Russia has started providing the defensive equipments to China. तो ठीक है, if Russia is balancing, we can also balance. And so far the way we have conducted diplomacy, that has ensured that we have not antagonized Russia. ठीक है? तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं. फिर है अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो देयर आर वेरी फ्यू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विच आर वेरी आइडियोलॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल लेटिन अमेरिकन स्टेट्स विच आर मोर एंटी वेस्ट और सर्टेन स्टेट्स. सो इंडिया नीड्स टू, और इंडिया हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग विद द, ऐसे वर्ड्स हैं आपके पास, लाइक माइंडेड कंट्रीज. ठीक है? तो इंडिया विजन फॉर ग्लोबल साउथ, that can reduce if there will be any disagreement or any you can say discontent with India's engagement with the Western countries. So India is placed in such a geography that India will have to go for multiple alignments, and at any cost we cannot ignore the West, because West has many things to offer which India requires in terms of defense, in terms of political capital, in terms of economy. आ गया समझ में? तुम लोगों ने क्या सोचा था, क्या लिखेंगे? यही सोचा था? अगर आपने बहुत ज्यादा ध्यान नेटो और वेस्ट पे दिया होता, नेटो और EU पे, कि नेटो एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हो जाता गड़बड़. आपको वेस्टर्न नॉन अलाइनमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना था. तो बताया तो कि भाई रशिया के साथ हमारे रिलेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं. ज्यादा ही तो पॉजिटिव ही तो है, और पॉजिटिव है इसीलिए हमारा मल्टीपल अलाइनमेंट है.
ठीक है, लाइक माइंडेड कंट्रीज इन थर्ड वर्ल्ड ऑल्सो ना। क्या हम लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि यूएस और यूरोप का जो स्ट्रैटेजी एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट रहेगा एंड देन इंडिया के लिए वो कैसे काम करेगा कि हमारा दोनों के साथ? नहीं, ये तो साथ में बोल रहे हैं, यूएस एंड यूरोप, मतलब ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप, या ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये लिबरल वर्ल्ड है, इनके साथ हमारा संबंध अच्छा होने से हमें क्या फायदा है। तो इंडिया के पास एक ग्लोबल साउथ है और एक ग्लोबल नॉर्थ है, तो इंडिया इज वर्किंग विद बोथ। इंडिया इज अ ब्रिज बिल्डर and we have interest in both, and we have always believed in non-ideological, non-confrontational politics and working with the like-minded countries, asserting our strategic autonomy. And since the end of Cold War, multiple alignment has been the broad paradigm of India's foreign policy. नहीं, लाइक माइंडेड कोई स्टिक नहीं है कि किसका, किसके पर्सपेक्टिव से लाइक माइंडेड की बात की जा रही। नहीं, क्लैरिफाई नहीं करना है। अगर आप सही जगह सही वर्ड लिख दे रहे हैं तो अपने आप आपको क्लैरिटी है, क्लैरिफाई नहीं करना होता है। वो क्वेश्चन है ना, हम तो लाइक माइंडेड अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। इसका आप चाहते हैं हम आंसर लिखा है या आगे बढ़े? आगे बढ़े, हाँ। हमारा रिलेशनशिप विद द वेस्ट, हाउ मच इट इज यूजफुल फॉर इंडिया, expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India. क्या आपको लगता है नेटो स्ट्रांग होने से हमको फायदा है? नेटो स्ट्रांग अगर होता है और नेटो प्लस जैसा प्लेटफॉर्म बनता है तो भले हम उसके मेंबर नहीं हो तो चाइना, रशिया या एडवर्सरीज को तो कंटेन करते ही है ना। और दूसरा है स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो हमारा क्या नुकसान है? हम तो वैसे भी यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम यूरोप के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमें प्रॉब्लम होती जब ये दोनों लोग अलग अलग होते। तो इनके होने से हमको चॉइसेस नहीं करनी पड़ेंगी ना। We will be more relaxed. If they will be more tensed, we will have to walk on the tight rope. There will be little room to maneuver. कहाँ पोलराइजेशन? ये क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे बस यूरोप और यूएस का बीच संबंध अच्छे हुए तो क्या ये भारत के हित में है। लेकिन कभी भी कोई चीज ना कंप्लीट हित में होती ना कंप्लीट अगेंस्ट होती। ठीक है, फिर भारत ऐसी जगह है जिसमें नॉर्थ साउथ पॉलिटिकली भी ज्योग्राफिकली भी, तो हमारे पास तो वैसे ही मल्टीपल अलाइनमेंट है हमारा पास ऑप्शन। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारा बेस्ट गाइड है। और हमने अपोजिट सेक्शंस के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन किया और वर्ल्ड ने उस चीज को एक्नॉलेज किया है कि देयर मतलब यूएस कम्स टू इंडिया एंड गोज फॉर पार्टनरशिप नोइंग दैट इंडिया विल नॉट सपोर्ट यूएसए's रेजोल्यूशंस अगेंस्ट रशिया। ठीक है, तो आ गया समझ में?
डिफरेंट नहीं, हर आंसर का एसेंस निकाला जाता है। जैसे किसी ने कुछ कहा तो तुम्हें निकालना होता है कि क्या कहना चाह रहा है, what they mean to say. They mean to say that two things. If West becomes strong and their internal divisions gets less, is it beneficial to India? And if collective defense pacts like NATO become stronger, is it beneficial to India? They are asking in context of NATO because historically we have been against the defense pacts. Fine? And historically throughout Cold War our position has been more anti-West. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? Nothing is constant. The world of international politics changes so fast. Fine. So it is like we have adjusted to the new realities, and the new realities show that today the biggest threat is China and authoritarian states which have a potential to destroy the liberal world order, which is beneficial for India's growth or India's political aims, etc. ऐसे बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। Ma'am, in context of not only NATO but also in as the permanent membership in UN, this partnership also helps us, ना? हाँ, तो सब लिखो ना कि कहाँ फायदा है, लिख पाओगे ना। मैम सिर्फ नेटो से ऊपर भी तो जा सकते हैं, जैसे कल आप बता रही तो थी। वही तो, नेटो एक है और यूएस यूरोप। ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिकली हम कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट्स के अगेंस्ट रहे हैं। हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता था कि एंटी अमेरिकनिज्म इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, लेकिन आज सिचुएशन अलग है। तो सिचुएशन अलग है तो उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंजेस फास्ट, दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ चेंज, नथिंग इज परमानेंट, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। हम तो रशिया को दुश्मन समझना सही नहीं रहेगा ना। दुश्मन थोड़ी समझ रहे हैं, रशिया को दोस्त मानते हुए दोस्तों की संख्या बढ़ा रहे। हमारे जितने भी दोस्त होंगे हमें उससे फायदा ही है। On in international politics, friendship is not based on any emotional ideological grounds. It is based on very hardcore strategic interest. Every country does what works for its national interest. One of the virtue of a foreign policy is how much flexibility you have, how much fast you adapt to the changing situations. ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा ऐसे लिख दें हम। तो जयशंकर जी से क्या फर्क पड़ता है तुमको? वो तुम्हारे विचार पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसा लगता है? अरे तो जयशंकर जी अल्टीमेट थोड़ी हैं, क्या तुम उनसे अच्छा नहीं सोच सकते? उनको क्यों मान रहे हो कि उनके ऊपर कोई नहीं सोच सकता है? तो तुम अगर फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर होते तो तुम क्या करते? जयशंकर जी को फोन मिलाते, आज्ञा दीजिए हम ऐसा करें? तुम अपने दिमाग से चलो। तो हमारा दिमाग ये कहता है, अब जयशंकर जी का पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हो सकते हैं ना। इफ इंडिया इज सेइंग कि वेस्ट, मतलब वेस्ट इज नॉट always nice and they have all these things, you have to criticize West. क्यों? Because otherwise if you will say, you will become yes man, आपकी इमेज इंपैक्ट होगी। आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेना है। हमें क्या फायदा है? हो सकता है वेस्ट ही कह रहा हूं हमें कि तुम क्रिटिसाइज करो, क्योंकि
यू नीड कॉन्फिडेंस, कोई तो होना चाहिए ना, इंटरलॉक्यूटर ऑफ द वेस्ट हु कैन टॉक विद द रेस्ट। तो पॉलिटिक्स भी तो समझो कि जयशंकर जी जबरदस्ती थोड़ी एंटी वेस्ट हैं, वेस्ट वाले कह रहे हैं एंटी वेस्ट भाषण दो, ठीक है। तो हर चीज क्वेश्चन तो पूछो क्यों कर रहे हैं ये। एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। See the action, see Prime Minister Modi's visit, see the type of agreement from space to technology and cyber security. तो हर कोई थोड़ी वो एग्रीमेंट पढ़ रहा होगा। अफ्रीका और बाकी जगह के देशों के लिए थोड़ा एंटी वेस्ट बोल दिया उतना बहुत, बालकन वहां सब ठीक है, they will be happy. You don't go by what politicians speak. You have to have your own position. I don't think we can ignore the West. I don't think we can pursue our relations with Russia at the cost of West. Okay, that is not at all possible today. और जयशंकर जी अल्टीमेट थोड़ी। मैम Yes, he is not the only scholar in the world. He is not the only person who knows IR in the world. ठीक है? Yes. मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप? No difference, not required. Yes. अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, strategic means something which require thinking, something for which you should do SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunity, threat, and make a plan of action. Strategic thinking करना और normal thinking करना। Strategic thinking मतलब you are playing the game with certain payoff in mind, कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कॉस्ट ये डिसाइड करना। हमारा ये गोल है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, किस कॉस्ट पे हम आई कैन बिड फॉर समथिंग। तो वही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जो बिजनेस में होती है। ठीक। Why should we join expansion of NATO when we are getting everything without joining? Why should we leave our autonomy? And you never know, you should never enter into permanent agreements. ठीक है, परमानेंट एग्रीमेंट करके फिर आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। आपको बेनिफिट्स गेन करने, लाइबिलिटी थोड़ी उठानी उनके। तुम नेटो के मेंबर बन जाओ, फिर उसके बाद कल वो कहेंगे कि 3% ऑफ जीडीपी हमको दो। तो हम लोग तो फ्री वाले लोग हैं, हम फ्री में फायदा उठाने वाले लोग हैं ना, इंडिया वाले लोग। तो इसीलिए हम जाते ही नहीं उसमें, परमानेंट मेंबरशिप में जाना ही नहीं किसी के साथ। ठीक है, तो अब हम आगे तो बढ़े। ठीक, ओके। अब ये जरा ठीक करा दो, कहाँ है नोट? तुम टच करो, आके करो। तो अब हम और देखते हैं, एक और था कहीं एससीओ, क्वेश्चन नंबर 9। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट is affecting the functioning of SCO. In light of above statement, point out the role of India in mitigating the problems. 9. इसमें पहले क्या समझना जरूरी है? Virus of conflict is affecting the functioning of SCO. So you have to understand the importance of SCO. First thing you should discuss is importance of SCO. तो what is importance of SCO? क्या है importance? What is SCO? SCO is a regional platform of Central Asia,
ठीक है, एंड ऐसे ही चल नहीं रहा, ये कुछ आ रहा है, शायद हो सकता है इससे रोकना हो. रीजनल प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल एशिया. ओके, and what is importance of Central Asia from the perspective of global geopolitics? Central Asia is heart of Asia या heart of world politics. तो there are scholars, you can mention those scholars जो well known है, जैसे मैकाइंडर क्या कह रहा है कि those who will control the Central Asia will control the world. ठीक है, तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम. तो भाई हम रोल परफॉर्म ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यू हैव टू टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल. हमेशा एनालाइज करने के लिए 3 वर्ड्स याद रखो: ग्लोबल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू वी ऑलवेज डिस्कस सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज. तो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया आर एक्सट्रीमिज्म, radicalism. Then the next geo-economic issues in terms of the natural resources which it has, in terms of the food basket of the world and many other economic issues, oil, gas, rare earth and other. And then geopolitics, the geopolitical element, because Central Asia is important from geopolitics point of view. That is why historically it has been called as a place of great games. Fine, because major powers have always remained involved. तो पहला ये. अब second है importance for India, so that India remains involved. तो Central Asia lies in India's extended neighborhood. Fine, and Prime Minister Modi has changed this phrase or discourse and said that Central Asia is not a part of extended neighborhood, it is a part of extended family. Okay, at SCO summit, this shows that how closely the Central Asia and India's interests are interlinked. And then SCO is the most important and the largest regional organization in this region. So obviously SCO becomes important for India. Fine. And then you can write little bit history that in 2017 India became the full member of SCO. तो थोड़ा historically दे दीजिए. Now the virus of conflict is affecting the functioning of SCO. So you know that SCO is a very important organization, but since the beginning it has been a non-starter. There has been nothing significant in SCO. Okay, and the only recognizable activity of SCO that can be seen is their RATS structure. Okay, and so it has been a non-starter. And why non-starter? Because from initial its members have lot of bilateral issues. Fine, so it can also be called as a platform which is full of so much of internal contradictions. For example, Russia was in SCO, but Russia was concerned about Chinese hegemony in the region, and Russia has been the main force behind bringing India in this particular platform to establish the balance. Then
there have been many inter-state conflicts among the Central Asian states on border issues, on land issues, on water issues, as well as on ethnic issues. Fine. And there is also a disagreement or lack of consensus among Central Asian states with respect to their foreign policies related to the three great powers. Fine. Some are pro-US, some are pro-Russia, some are pro-China. So it was never a coherent house as such. And then the contradictions increased further when both India and Pakistan also became the member, and we already know the contradiction between or the conflict of interest between India and China as well as India and Pakistan. Fine. So इसलिए हम कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि after the end of Cold War or after the exit of US, it was believed that it is going to play, or it is going to emerge as a more significant platform. But again, there are lot of problems which put a question mark on future of SCO. The first is Russia's war in Ukraine, fine, and Russia's isolation. And there are so many problems if countries go for any meaningful trade with Russia. ठीक है. And Russia as an authoritarian state, and which in the eyes of the West and others also has violated the norms in international law, and sharing a platform with the country is obviously a cause of concern. And then India and China Galwan crisis is still there. Pakistan issue continues to be there. And then we have seen that there has been an eruption of violence. And I think Belarus is also a potential member. And there have been problems in Belarus and Poland and these type of issues where Belarus was also using its position against the Western countries. ऐसे कर सकते हैं. And obviously there has been a conflict between Tajikistan and Kyrgyzstan or Kazakhstan. तो इनके conflicts होते ही हैं. तो is affecting the functioning of SCO. Hence, there are more clouds of suspicion about the future of SCO as of now, because the conditions required for evolution of a strong regional organization are neither existing in internal or external terms. तो ऐसे हम कह सकते हैं. In light of above statement, point out the role of India in mitigating the problems. तो इंडिया का क्या रोल यहाँ पर दिखता है. ठीक है. तो what all India can do in about it and India's role. तो सबसे पहले you should discuss little bit of India's perspective towards SCO. Fine. So initially we were not very enthusiastic about SCO because SCO was seen as an anti-West platform. West also held that SCO has been a Asian NATO type of a thing. So India was reluctant to join, but later on India became a member of SCO or tried to join SCO because or increased its scale of representation. Earlier Prime Minister used to never go, but it's because we were apprehensive and we believe that this is an anti-Western platform and China-led platform. But then we understood that to manage a situation, you need a
regional platform. And now a major concern, like some of the objectives of SCO, they are in convergence with the wider interest of India. For example, fighting against radicalism, extremism, and the next is connectivity issue, fine, which is another important thing. So India has seen SCO with a new perspective, a place which can help in building India's soft power, India's hard power, and which can position India in a very significant geography from the perspective of world politics. तो India has been a part of it. ठीक है, तो role of India in mitigating the problems. So everyone knows that today multilateralism is in crisis, fine, and if the New Delhi Declaration emerges of SCO, and where on majority of the points which India has put forward, if a consensus has emerged, it shows that the New Delhi Declaration, where some very important programs of action that have emerged is in the field of digitalization and digital connectivity, or in the field of traditional medicine. This shows that because of India's efforts, SCO continued to remain in relevance, because if consensus emerged, it shows that despite these conflicts, countries are willing to work together. India has done a very active diplomacy. More than 140 meetings have happened, and India has played the role in energizing SCO. And again, since connectivity is two major objectives of SCO, one is counter-terrorism, and Prime Minister Modi came very clear in suggesting that there should not be any double speak, fine, as far as the terrorism, fight against terrorism is concerned, and no one should be supporting any such thing. So he has pointed out that if you want this particular region should be in peace, prosperity should come, we have to overcome and just reject the double standards about with respect to terrorism. And next is the connectivity project. And as many countries have started feeling the heat of China's connectivity project like BRI, so India's alternative project in the form of INSTC, that can give a better alternative to these countries who are looking for connectivity. And India held a separate meeting with the Central Asian countries, and they have expressed their interest and faith in INSTC project. So we can say that role of India in mitigating the problems. So problem number 1 क्या है? SCO becoming and has always been a China-centric platform. Though all countries in the region are not pro-China, so India's presence here, it ensures that the image, even the image of SCO, it ensures that it should not be seen as China-centric platform. And India being present there, India's initiatives like Connect Central Asia and other things, it gives them an alternative to China. Fine. So, and again, India's perspective with respect to Afghanistan has also found a place in New Delhi Declaration, where India said that it should not be, or whatever solution
पहले वही है, अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड अ प्लेस फॉर हेवन ऑफ टेररिज्म, एंड द सॉल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान शुड बी अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड. तो एवरीबडी हैज एग्रीड टू इट. ठीक है, तो इसका मतलब है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन शोज दैट SCO has not died under the weight of its contradictions, and SCO has charted out a clear program of action towards digital in मतलब digitalization का कुछ है pillar, and second pillar is with respect to traditional medicine and other things. Means SCO has something concrete to work on. ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, एंड इसको एंड कर सकते हैं in the form of Prime Minister Modi's statement, who himself said that whether SCO is ready to modify itself and change itself according to the changing requirements of the time. ठीक है, तो is SCO prepared to meet? Otherwise, if SCO is not prepared to meet, SCO will go out of significance. ठीक है, ये बेसिकली इसका इश्यू था. तो हाँ, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड ही हो गया. इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट. डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया. तो वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आप थोड़ा सा और भी कुछ लिख सकते हैं. कंसेप्चुलाइज करिए पहले. इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट. डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक. तो इसका क्या कंसेप्चुलाइजेशन हो सकता है? इसका कंसेप्चुलाइजेशन ये होगा कि इन प्रेजेंट टाइम्स foreign policies cannot be conducted on the single track of government to government track. So you will require multiple actors, be it the corporate classes, be it the civil society, and in this context, diaspora assumes a significant importance. And Prime Minister Modi calls them as brand ambassadors of India. कुछ कोई दूत ऊत बताते हैं, वो पता है? I have heard, but अभी वो कुछ पता नहीं, कोई दूत कुछ बताया है उन्होंने. ठीक है, तो diaspora for any country act as a brand ambassador. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा की. So the global migration report has shown that in the world, the largest diaspora is India's diaspora. Pardon? राष्ट्रदूत, हाँ कुछ तो बोला था, राष्ट्रदूत करके. ठीक है, तो मोदी जी चाह रहे हैं कि IFS की संख्या ना बढ़ाएं हैं और सस्ते में काम निकाल ले इन्हीं के थ्रू. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्चुलाइजेशन करें, और नेक्स्ट आप इंडियन डायस्पोरा. और इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट, द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट शोज दैट द नेक्स्ट लार्जेस्ट डायस्पोरा इज ऑफ चाइना. और अगर हम वेस्ट में करें या US की बात करें तो इंडियंस लार्जेस्ट हैं, सेकेंड मैक्सिकन्स हैं या मैक्सिकन्स हैं, थर्ड इज चाइनीज. बट एक बहुत बड़ा गैप है. और क्वालिटी ऑफ डायस्पोरा that matters, not just number. So Chinese diaspora does not matter in terms of quality. Quality in the sense, in terms of their social and political status in these countries. ठीक है, so recently a study has been conducted by economists, which I was talking about, that they are suggesting that every year some or the other Indian is assuming something, some very critical position, either in the country or in some international organizations. Means those organizations which are of huge significance
Fine. For example, WTO's president, who is he? Some Gaurav, World Banks. So, Ajay Banga. Then S&P का जो 500 कंपनीज हैं उसमें डेटा शो करता है अराउंड 25 CEOs आर इंडियंस. गीत वो तो, लेकिन वो कहाँ की है? इज शी नॉट इंडियन? हाँ, वो दैट तो आई नो. उनको तो शी वॉज अवर सीनियर ऑल्सो, मतलब 1 year सीनियर इन DU. ठीक है, तो बट मतलब आई डोंट नो उनका पासपोर्ट कहाँ का है. ठीक है, तो वो मतलब देयर आर सो मेनी पीपल यू कैन टॉक अबाउट पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. कमला हैरिस, ऋषि सुनक, या ये सब चीजें. तो और ये वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली इन द वेस्ट. ठीक है, स्पेशली इन द वेस्ट द स्टडी शोज दैट this much number of members have a representation in US Congress, in British Parliament. Fine. So this itself shows that they have become, and even India's lobby in US has become the strongest and the richest, and in a way more influential. Up till now Israel's lobby used to be influential, but ऐसे थोड़ा सा आप प्रोफाइल दे सकते हैं. Or they have scaled new heights from all perspective, political, economic, and otherwise, in terms of occupying the positions in the government sectors as well as the non-government sector. And the amount of remittances which India is getting in totality is also now the largest in the world. And the study shows that around 3% of our GDP is being contributed by that. तो उसमें दोनों तरीके से you can talk. Now, describe its economic and political benefits. So, what are political benefits? Because they act as a lobby, they are present in the civil society. They may play a positive role in creating the brand India image, in creating the positive environment in the non-governmental sectors also, and in terms of economic potential. So economic potential should not be just seen in terms of remittances, but how they are also shaping the policy choices of these countries and its impact. For example, Indo-US Civil Nuclear Agreement, या Indo-US Strategic Partnership, projects like India's participation in the critical projects like Make in India, in defense and other sectors. So they have been playing a role in lobbying for India. And again, they also built like they are playing an active role, because if you see the prime minister's visits and the type of participation, so that also builds India's soft power. It shows, it helps in building, and recognition is there. Government of India is also recognizing this in different ways. तो ऐसे करके इसको हम लिख सकते थे. तो अब हम थोड़ा political questions पे आते हैं. ये तो वैसे डायरेक्ट एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है. इसको करें. Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency
of using Article 356 by union governments since mid 1990s. So account for the legal and political factors. What are the legal factors? Judicial review, ठीक है, मेजरली SR बोम्मई केस, देन रामेश्वर सिंह केस आई थिंक, तो लेकिन SR बोम्मई केस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट कौन कह रहे थे आप? अच्छा, तो उसको लीगल में डाल सकते हैं, बट 44th गिविंग, अच्छा फॉर द रिड्यूस्ड, तो इस आंसर को कैसे लिखना चाहिए? अकाउंट फॉर द लीगल, अकाउंट मतलब एक्सप्लेन करें, फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल। इसमें क्या लिखना चाहिए पहले? आर्टिकल 356 के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना चाहिए कि इंडिया इज अ फेडरेशन, with a strong center to the extent scholars like K.C. Weir calls Indian model as quasi-federal. ठीक है, फिर हमें बताना पड़ेगा आर्टिकल 356 एंड व्हाई इट मेक्स इंडिया क्वाजी फेडरल, ठीक है। तो राइट अबाउट आर्टिकल 356, व्हाट विल यू राइट? इट्स अ यूनिक प्रोविजन which is not found in anywhere else, where union takes control over the state administration on the ground of breakdown of constitutional machinery, फिर हमेशा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स डाल दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्सपेक्टिव, कि इट हैज बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल in the constituent assembly, it was the most controversial issue, and Ambedkar assured that this provision is added only as a precaution and it will act as a dead letter. It will act as a dead letter. फिर हम दिखाएंगे, ये कह रहे हैं रिड्यूस हुआ है तो हाइपर यूज दिखाएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम यूज ऑफ 356 एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसमें लिखेंगे कॉन्ट्रेरी टू अंबेडकर्स promises, it became one of the most used provisions. Studies show that in less than 100 years,
it has already, matlab less than 100 years of republic, it has already been used more than 114 times. फिर ये है majority of the, the maximum number of instances, have been till 90s, and after which there is a decline in the frequency. ठीक है. एंड इसमें थोड़ा सा कि इससे प्रॉब्लम कर सकते हैं कि ऑन मेनी ऑफ द ओकेजन्स द यूज may not appear justified. ठीक है. इसमें लिख सकते हो the misuse has led to the growth of regionalism and secessionism. secessionism इंडिया से बाहर जाने का एक बहुत फैक्टर बन गया था. फिर the regional parties recommended repealing of this article. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं however from 90s onwards there has been reduction for various legal and political factors. ठीक है. तो इसमें among the legal factors the interpretation of Article 356 and the guidelines with respect to the use of Article 356 has considerably reduced the misuse. प्रेसिडेंट वाला मत लिखो, यही लिखो बस. ठीक है. फिर नेक्स्ट है अमंग द पॉलिटिकल फैक्टर्स coalition politics representing the regionalization of party system at the union has also prevented the frequent use right. Thus
both legal and political factors reduced the frequency and has strengthened the federal axis of Indian Constitution as well as constitutionalism in the country. Constitutionalism strengthen हुआ, रूल ऑफ लॉ, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज, हम ऐसे कह सकते हैं. नेक्स्ट इज, let us say article, ये question number 15. Explain the significance of 101st Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? 101 Amendment Act, GST, it represent the accommodative spirit. Accommodative spirit कैसे लगा? क्या accommodation किया? किसने किया accommodation? स्टेट्स ने एकोमोडेशन किया. और किस चीज पर एकोमोडेशन किया? सेल्स टैक्स पर अपनी ऑटोनॉमी दे करके. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन. तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? 101 अमेंडमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या फायदा है इससे? पैटर्न कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इससे फेडरलिज्म, ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. जीएसटी का सिग्निफिकेंस बताइए ना. पार्डन? टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हुआ, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन क्यों चाहिए? क्यों पे आओ? हाँ, इकोनॉमिस्ट जैसे नहीं सोचना है आपको, आपको पॉलिटिकल के एंगल से सोचिए ना. जीएसटी लाना मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दो चीजें हैं. इंडिया को राइज करना है तो हमारी इकोनॉमिक पावर ग्रो करेगी, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल इकोनॉमी से बेटर इंटीग्रेशन करना चाहिए. तो बेटर इंटीग्रेशन करने के लिए जो ट्रेड फैसिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उसका भी एक पर्सपेक्टिव है. ठीक है, तो ये इसके थीम है. तो इसके पीछे इसका आंसर आप तब लिख पाएंगे when you understand the theory behind federalism. ठीक है, and how does it fits into that particular theory. तो 101 Amendment Act with the objective of one country, one tax. What does it show? It shows that there are different logics behind federalism. And one logic of federalism is a common market. Fine. And common market creates the ease of doing business. Federations are formed primarily for two logics. One is security and other is economic. It shows the economic logic behind federalism. ठीक है, तो इसको हम पहले क्या समझाएंगे? थियरी ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है, इसमें ऐसे लिख लो थियरी ऑफ फेडरलिज्म में. हाँ, तो नहीं देते तो क्या जीएसटी अमेंडमेंट हो पाता? सेंटर ने थोड़ी एकोमोडेट किया, स्टेट ने एकोमोडेट किया. सेंटर ने क्या एकोमोडेट किया? दोनों में सेंटर ने क्या एकोमोडेट किया? कुछ नहीं किया. पावर ली ना इनकी,
एक एकोमोडेशन आप कह सकते हैं सर्विस टैक्स में एकोमोडेट किया, लेकिन जीएसटी में इनको डिसीजन मेकिंग दी, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो एसेंशियल था, उसके बिना कैसे होता। ठीक है, लेकिन ज्यादा एकोमोडेट स्टेट नहीं किया। ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, और आप इवन इफ जीएस है, आप इन लोगों का नाम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा ऐसी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन ऑलवेज टॉक विद रेफरेंस टू एवी डाइसी। ठीक है, तो ये लीगल एक्सपर्ट हैं, इनका डेफिनेशन लिखो। देखो, अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, फेडरलिज्म is a political formation where units desire unity without uniformity. So they come together for different reasons. ठीक है, फिर हम बता सकते हैं देयर आर, या फेडरेशंस आर ड्रिवन बाय डिफरेंट लॉजिक्स। तो डिफरेंट लॉजिक में फर्स्ट लॉजिक है सिक्योरिटी, सेकेंड लॉजिक है पॉलिटिकल, एंड थर्ड इज इकोनॉमिक। तो हमको किसको एक्सपैंड करना होगा? इकोनॉमिक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इफ, मतलब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है तो आप इन चीजों की थ्योरी नहीं समझेंगे। ठीक है, और जो टीचर, जिसने पॉल साइंस का टीचर नहीं, वो थ्योरी नहीं बता पाएगा, वो ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे। तो फिर कोई कॉन्सेप्ट के बिना चीजें डिस्कस करने का कोई, अभी तक तो आप पूरा पॉलिटिकल साइंस से ही कर सकते थे पेपर। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है, तो हमें इकोनॉमिक लॉजिक पर जाना है। ठीक है, तो इसमें लिखो इफ seen in economic sense या from economic logic, federalism is a big market or a common market. तो बिगर मार्केट, इससे फायदा क्या होता है? बिगर मार्केट मींस more economic activities, हमेशा समझ दिखाने की कोशिश करो, जानकारी नहीं। ठीक है, more economic activities means more avenues for economic growth. अब हम 101 अमेंडमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो 101st अमेंडमेंट एक्ट इज अ वेरी बिग चेंज इन इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, अब लिखो दिस चेंज became necessary because of
of the realities of post Cold War economic logic. पोस्ट कोल्ड वॉर इकोनॉमी क्या है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक लॉजिक बेस्ड ऑन नियो लिबरल आइडियाज, फुल स्टॉप. इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, increasing integration of India in international economy, requires the creation of conducive environment which facilitate the trade. Next, the multiplicity of the tax regimes go against the idea of ease of doing business. फिर India's membership to certain platforms like APEC hinges on demonstration of India hinges on demonstration of India to create more business friendly environment. Next, even with respect to tax administration, in terms of collection of taxes, GST is a significant reform. Next, in the from the perspective of the Prime Minister, GST reflects the vision of सबका साथ, साथ and सबका विकास. ठीक है, अब लिखो, इट इज द ब्यूटी ऑफ constitutional approach to Indian federalism which allows such a far-reaching changes to meet the challenges of time without destroying the spirit and the basic structure. ठीक है, अब ये
बता रहे हैं एकोमोडेटिव स्पिरिट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी इज अ good example to understand the idea of cooperative federalism. ठीक है, right? In cooperative federalism, center and state do not act as two watertight compartments. Watertight compartments, अलग अलग नहीं, right? But they work together reflecting the spirit of Team India. टीम इंडिया, ठीक है। तो जीएसटी फिर इसमें एकोमोडेटिव स्पिरिट दिखानी पड़ेगी। जीएसटी was concerned with two major changes या major reforms. One is sales tax, another is service tax. अब इसमें accommodative spirit लिखते हैं। Despite the sales tax has been the most important from the perspective of revenue collection, by the states, yet states agreed to dilute their sovereignty क्यों एग्रीड किया टू डाइल्यूट? मोदी जी ने डाटा कंपनसेशन के लिए, और क्यों एग्रीड किया? किसी से कहो क्यों एग्रीड किया, तुम बताओगे कंपनसेशन के लिए। इतनी छोटी मानसिकता मत रखिए, हमेशा पॉलिटिशियन जैसे बोलना है, ऐसे शब्द जो सुनने में अच्छे हो। अरे ये सब कोई फाइन नहीं समझना है, बड़ी बड़ी बातें करी जाती है। अरे बस लिखो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऐसी बातें बोलनी जो लोग समझ ना पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट हो जाए, खाली मूली की बातें, ठीक है। बस क्या लिखना है हमने? इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। और क्या, बस कोई कहे कि कंपनसेशन के लिए किया है तो वाइडर गुड। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और वैसी लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। एक बड़ा त्याग किया गया देश के लिए, ठीक है। अब सेकेंड लिखो, राइट राइट। सिमिलरली the service tax which was newly introduced and where center had monopoly, now state also
have a role in decision making. Next paragraph देखो, right? Thus it reflects the accommodative spirit and reflect the strengthening of क्या क्या चीज स्ट्रेंथन हो रही? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है। अरे कुछ बड़ी बात करो है? और क्या आता है तुम लोग के दिमाग में? कुछ आता और लाओ दिमाग में, बड़े से बड़ी चीजें लिखो। राइट, इस 5 ट्रिलियन पैसे से ध्यान हटाइए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और क्या आ सकता है आपके दिमाग में? हाँ, नेशन ना, यस। क्या लिखना है लास्ट? इट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नेशन वेशन नहीं बोलते। आइडिया ऑफ इंडिया, बस जो फ्रेज है वो तो लैंग्वेज है। मतलब इससे इंडिया एक नेशन के रूप में, हम सब लोग डिविजन्स और डिफरेंसेस होते हुए भी जरूरत पर साथ हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लिख सकते हो कि लिखो, राइट, इट इज ऑब्वियस दैट इन डेमोक्रेसी lack of agreements will emerge and therefore amendment also provides for an institution for collective decision making and dispute settlement। ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ा तुम लोगों ने हिंदू में? क्या अभी इससे क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट? कंसेप्ट पे जाओ। अब और क्या बचा? मतलब अच्छा, इसके बारे में टू व्हाट एक्सटेंट डज इट, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म पूछ रहा है कि बेनिफिट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ी क्वेश्चन है। पेपर 3 का क्वेश्चन थोड़ी है ये। बताया तो फेडरलिज्म इज अ बिग मार्केट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब है HR विचार, ये सब आलतू फालतू गवर्नेंस। अब कौन क्वेश्चन बचा? कोई नहीं बचा क्वेश्चन। हाँ, एक और कुछ लग रहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी वाला था, पहले वो करते हैं। 16, explain the structure of parliamentary committee system। क्वेश्चन नंबर 16 लगवा दो यहाँ पे। explain the structure of parliamentary committee system, how far have financial committees helped in institutionalization of Indian parliament। ठीक है, do you understand institutionalization ऑफ इंडियन पार्लियामेंट क्या होगा? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो रही,
उसका क्या मतलब हुआ? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है क्या? अगर नहीं पता है तो बोलना जरूरी नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर देना इतना जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछना टीचर का एक टेक्निक होता है, जैसे टीचर को ना समझ में आए तो कभी कभी, आज तुम लोगों को एक टीचिंग टेक्निक बता दिया, टीचर क्यों पूछते हैं क्वेश्चन, ये जान लेते हैं कि इनको कितना पता है, यानी नहीं पता है तो कुछ भी चलेगा। हर फील्ड की अपनी पॉलिटिक्स और स्किल्स होते हैं, या फिर किसी के दिमाग से कुछ अच्छा आ जाता है, उससे अपने को आइडिया आ जाता है। लेकिन टीचिंग स्किल में ये भी है कि स्टूडेंट की बात को एक्नॉलेज नहीं करना है, ठीक है, और उसको काउंटर करना है। फिलहाल आपको ये टर्म्स है ना, टर्म्स को कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना आना चाहिए। आई थॉट कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे मैंने एंड हाउ फार फाइनेंशियल कमिटीज help in institutionalization of Indian Parliament. Institutionalization का मतलब यहां पे हुआ acceptability and recognition that Parliament plays a critical role. ठीक है, मतलब उसको एक इंपॉर्टेंस के रूप में वो चीज एस्टैब्लिश होगी, ये बताना है। ठीक है, कि हाउ फार, और स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज पता है कि नहीं? इनको बुलाओ, इनको साथ, पता है तुम्हें कि नहीं स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज? पार्लियामेंट्री कमेटीज का स्ट्रक्चर नहीं पता है? क्लास में हमने किया, तुमने पार्लियामेंट किया था कि नहीं? उस समय घर गए थे। अच्छा, और कोई था अप्रैल बैच में? हाँ, वही वही स्ट्रक्चर कमेटीज। हाँ वही तो, हमको चेहरा याद था कि तुम थे वहां, पता रहता है। ठीक है, तो हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब है एक्सेप्टेबिलिटी, लेजिटिमेसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट करेंगे? इंस्टीट्यूशन पहले इससे करें या पहले इससे करें? इससे करें, इसके लिए ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री, क्या है? पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो उसमें हम पहले पार्लियामेंट का रोल बताएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एंड इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड the parliamentary form of government where executive is responsible for, executive is responsible to the lower house of parliament.
फिर लिखो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर is not formulation of laws. लॉ तो एग्जीक्यूटिव बनाती, ठीक है, बट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी and financial accountability is obviously the most important aspect of accountability. ठीक है, अब लिखो, अब मतलब हम क्या लिखेंगे, हाउ अकाउंटेबिलिटी इज मेंटेन्ड, हाउ दिस थिंग इज बीइंग एक्सरसाइज्ड. ठीक है, तो राइट पार्लियामेंट holds accountability by scrutinizing the bills proposed by the executive full stop. Parliamentarians are expected to perform या to conduct the informed debates ठीक है. अब in this context the role of committees assume critical importance. अब ये समझाना होगा क्यों. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज सेट दैट या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस कांग्रेस it is said that Congress in session is a Congress at display and Congress in committees is a Congress at work. ठीक है, it shows that the real legislative business of parliament takes place in committees. तो फिर next, committees work outside the media glare, hence easy to arrive at consensus next, committees may involve the experts to prepare the better policies. तो कमेटीज के पीछे की थ्योरी बना देंगे. अब है
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। तो इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज। अब यहां मत लिखो, लेकिन वैसे लिख देना कि थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि parliamentary committees, what are parliamentary committees? This is defined in the rule of business, and a committee which is constituted by speaker and which works under the speaker is a parliamentary committee। ठीक है, तो बाद में लिख देना, अब यहाँ पे इतना क्या ये लिखोगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, तो parliamentary committees are of two broad types। First is the standing committees and ad hoc committees। फिर ad hoc committees भी दो तरीके की हैं। select committees which deals with particular bill and other। Next, the standing committees deals with different issues like privileges of parliaments, committee on subordinate legislations। अब हम फाइनेंशियल पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर however the financial committees are the most significant ठीक है। अब since beginning we have three financial committees। First is a estimate committee। तो अब ये सब वहां पे लिख देना 30 मेंबर, बट इसका पर्पस क्या है? इट इज लाइक टू एडवाइस ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। लिखो, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑन द बजट with the objective of gaining efficiency and economy in policy making। Next, public account committee which scrutinizes the expenditure, then committee on PSUs, expenditure by the executor। ठीक है, and CAG supports this। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में लिख सकते हैं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एंड थर्ड इज कमिटीज ऑन PSUs, because PSUs, once India had such a very expanded structure of PSUs, fine, तो PSUs auditing, accounting could not be done along with other departments, so a separate committee is existing। अब इसी में हम कर सकते हैं towards financial accountability, an important innovation has been the introduction of DRCs, departmentally related standing committees। Towards financial
aspect, an important innovation is introduction of department related standing committees, which started from 1996. अब इसकी समझ आनी चाहिए आपको, इसका क्या काम क्या है करते ये। पोस्ट बजट थोड़ी, बजट के दौरान। बजट जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पर्पसफुली थोड़े दिन बाद ही उस पर डिस्कशन चालू होता है। तो ये जो होती हैं ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं। तो इससे दो चीजें हुई। पहला चीज ये हुआ कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी वो खर्चे के बाद स्क्रूटनी करती, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है कि खर्चे से पहले स्क्रूटनी करने का कल्चर स्टार्ट हुआ। और इन अ वे ये एस्टिमेट कमेटी के भी फंक्शन को क्या करती है कि जो एस्टिमेट कमेटी का रिकमेंडेशन होता है वो तो नेक्स्ट ईयर के बजट पे लगता है, ठीक है, तो उसके भी काम को, ये जो गैप्स थे हमारे कमेटी सिस्टम में, ये इसको कवर करती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या लिखा है हमने, इंपॉर्टेंट इनोवेशन, हाँ ठीक है, लिखो, राइट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट it scrutinizes the demand for grants by different ministries. Thus it bridges the gap which was there in the functioning of the other two. For example, Public Account Committee is scrutinized after expenditure, तो ये पहले करके दे सकते हैं, उसको हम और प्रोएक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम एस्टिमेट कमिटीज रिकमेंडेशंस were meant for the budget of next year. तो ये ऐसे समझा सकते हैं। फिर हम इस पे आ जाते हैं कि ये कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब लिखो, राइट सिंस कमिटीज हेल्प इन Parliament's core functioning of ensuring financial accountability, it allows Parliament to perform its work with efficiency, which would not have been possible
without these institutional mechanisms, ठीक है, हेंस इससे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या हेल्प होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, ठीक है, हेंस इट strengthens the trust of the people in the system, that taxpayers' money is not misappropriated. लेकिन कमेटी सिस्टम इन इंडिया इज नॉट इन इट्स बेस्ट फॉर्म, तो देयर आर प्रॉब्लम्स, तो वो एक पैराग्राफ में लिख देना चाहिए. इसमें लिख सकते हैं, हाउएवर देयर आर सर्टेन कंसर्न्स इन द वे कमेटी सिस्टम ऑपरेट्स, इसमें पहला लिख दो, अकॉर्डिंग टू PRS legislative research, the number of bills referred to the committees have reduced drastically. Next point, right, often the reports of the committees are not presented or discussed. Next, there is a lack of capacity which requires training and capacity building of the legislators. ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है. यानी मेंस के लिए तो कुछ पढ़ना ही नहीं था. हा? अब मेन गेम तो पीटी हो गया है. इस बार का पेपर तो काफी, लेकिन क्या है, चीजों को कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके पीछे की थियरी, वरना ऐसे आंसर नहीं लिखा जा सकता है. जैसे लोगों ने बहुत मॉडल आंसर और सब डाल दिए, बट दे आर सो मैकेनिकल, उसको स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, ठीक है. 5 पॉइंट ऐसे, 5 पॉइंट वैसे, पॉइंट्स देना इज डंपिंग ऑफ फैक्ट्स. तो ना तो वो पता नहीं, मतलब कैसे तुम लोग को आसान लगता है उसे पॉइंट्स रट देना, ना तो बिना समझे. तो ऐसे डंपिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं. ईज ऑफ डूइंग आंसर राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है. एंड देयर इज नो नीड, मतलब पहले किसी भी चीज को करने से पहले उसका एसेंस, हर चीज की एक थ्योरी है ना, हर चीज की एक फिलॉसफी है, which you should understand. So the next part will be done after lunch break. ठीक है. And mostly now governance topics are left, and then security and science and technology. So finish the complete process. हाँ बेटा, रह गया? अच्छा, मैं पता करता हूँ. Okay.